更大的力度、更高的标准、更高的效率，推进中巴经济走廊建设，将其打造成为高质量共建“一带一路”的示范性工程。 为中巴全天候战略合作伙伴关系持续发展注入新的动力。今年是共建“一带一路”倡议提出10周年，也是中巴经济走廊启动建设10周年。10年前，习近平主席提出共建“一带一路”的伟大倡议。 和亲、诚、惠、容周边合作理念，巴基斯坦积极响应，中巴经济走廊应运而生，蓬勃发展，成为共建“一带一路”重要先行先试项目。2015年，习近平主席对巴基斯坦进行了历史性的国事访问。 中巴关系提升为全天候战略合作伙伴关系，确立了中巴经济走廊1+4的合作布局，走廊建设步入快车道。中巴经济走廊建设秉承和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的丝绸之路精神。 开创了共建“一带一路”构建人类命运共同体的成功实践。10年来，中巴经济走廊的建设扎实推进，成果丰硕，成为一条充满活力的开发走廊。在双方的共同努力下，以走廊建设为中心，以瓜达尔港 交通基础设施、能源、产业合作为重点的合作布局，从蓝图变成现实。瓜达尔港已经具备全作业能力。苏库尔 Multan Motorway and the upgraded KKH Phase 2 are now open for traffic. 中巴首条 Cross-border optical fiber cable between China and Pakistan, Pakistan's first urban railway Orange Line, and the first HVDC transmission line between Matiari and Lahore were put in use. Sahiwal coal-fired power plant was completed ahead of schedule at an impressive Punjab speed. Power plants in Port Qasim, Hub and Karalt were completed and put into operation. The Rashakai Special Economic Zone is up and running. And cooperation on agriculture, science and IT and people's well-being is making steady progress. CPEC has become an important driver for regional economic growth. It has set an example of mutual trust and common development. Over the decade, CPEC has promoted development and delivered shared benefits. It has become a corridor of well-being and prosperity. According to statistics, CPEC has brought $25.4 billion of direct investment to Pakistan, created thousands of jobs and added 500 kilometers of highways, 8,000 megawatts of electricity, and nearly 900 kilometers to the national core transmission network. It has significantly changed local economy and livelihood. Guada Port has turned from a small fishing village to a regional logistics hub, and children in Fakir now have bright new schools. Women in Tar have now become professional truck drivers, and commuting time in Lahore has been greatly reduced. And many people no longer have to worry about frequent power outages. CPEC has brought significant changes to many ordinary people and has set an example of people first and shared benefits. Over the decade, CPEC has promoted win-win cooperation and has become a corridor of friendship. CPEC is a cooperation platform and is also a bond of friendship that brings our two peoples close together. It is a new benchmark for China-Pakistan friendship.
Over the decade, Chinese engineers and Pakistani workers have worked hand in hand and in close coordination. They have set up buildings and built roads in some of the most impossible places, performing so many touching scenes of collaboration, excellence, mutual trust, and mutual support. During COVID, workers from the two countries overcome the difficulties to ensure the smooth operation of completed projects and steady progress of ongoing ones, writing stories of mutual support and winning cooperation. CPEC opens up a new chapter of China and Pakistan community with a shared future in a new era and sets an example of mutual support and good neighborliness. Here, I pay tribute to the diligent and courageous Pakistani people and to Chinese and Pakistani workers who participate in CPEC. It is your support, contribution, and hard work that turns CPEC from vision to reality. Your Excellency, Mr. Prime Minister, ladies and gentlemen, friends. Looking forward, China-Pakistan cooperation and CPEC will embrace new historical opportunities. China is following the guiding principles of the 20th CPC National Congress to apply the new development philosophy, foster a new development paradigm, and pursue high-quality development, and advancing the rejuvenation of the Chinese nation through a Chinese path to modernization. Pakistan is also exploring a path to industrialization, modernization, and sustainable development. We should continue to aim for high standard, sustainable and livelihood-enhancing outcomes, step up coordination and cooperation to build an upgraded version of CPEC, to break new grounds for high-quality development of CPEC, so as to promote an even closer China-Pakistan community with shared future, bring more benefits to our two peoples, and make our own contributions to regional or even world development. To this end, I would like to propose the following suggestions. First, jointly building a growth corridor. We need to stick to the set blueprint and implement the long-term plan of CPEC. We should strive for an early start of the ML1 upgradation project, improve the overall planning for industrial park cooperation, and further promote practical cooperation on various fronts to help Pakistan achieve sustained, steady economic growth and achieve national prosperity. Second, jointly build a livelihood-enhancing corridor. We need to put the people first and deepen cooperation on industry, agriculture, health, education, training, and people's well-being, and to carry out more small and smart livelihood projects. We need to develop human resources, create more jobs, so that more dividends of CPEC can be shared among the Pakistani people. Third, jointly build an innovation corridor. We need to follow an innovation-driven approach, give full play to relevant working groups, and expand cooperation on new areas such as high-tech, mobile communications, e-commerce, AI, and smart cities, to inject more impetus to CPEC with innovation. Fourth, jointly build a green corridor. We need to uphold green development and forge greater synergy between the Green Silk Road with the Green Pakistan Initiative. We need to prioritize resource saving and environment protection, step up cooperation on green investment, infrastructure, agriculture, and disaster relief, and follow a path of green and low-carbon development. Fifth, jointly build an open corridor. We need to uphold openness and inclusiveness, actively step up communication and coordination with regional countries, welcome the participation of third parties in CPEC, and promote the extension of CPEC so as to advance regional connectivity and economic integration, to share cooperation opportunities,
and pursue common development and prosperity. Ladies and gentlemen, friends, the world today is marked by volatility, and the changes unseen in the century are unfolding faster. Humanity is facing unprecedented risks and challenges. Not long ago, Chinese Premier Li Qiang and Prime Minister Xie Bas had two productive conversations and meetings, reached many new and important consensus. China is now carefully implementing these consensus. China and Pakistan are good neighbors, friends, partners and brothers. Our joint effort against challenges will play a significant role to peace, development and stability of our two countries and the region. China firmly supports Pakistan in safeguarding its national sovereignty, independence and territorial integrity, and in pursuing national unity, social stability and economic prosperity. We are sure that the diligent and courageous Pakistani people will create a better future with their own hands and focus on development to hold the future of Pakistan firmly in their own hands. The road ahead for Pakistan will be wider, and the prospects for Pakistan's development will be brighter. China and Pakistan are bonded by shared mountains and rivers and common interests. Our two peoples share a time-honored and rock-solid friendship. CPEC is an accelerator of cooperation, new engine for growth, and a planter of friendship. It is further deepening our all-weather friendship, and we have gained valuable experience from it. First, sticking to strategic guidance. President Xi Jinping and the Pakistani leader attach great importance to CPEC. They have devoted personal efforts to use every meeting and exchanges of letters to exchange views, which provides top-level design and sets the direction for CPEC. Staying committed to extensive consultation and joint contribution. On the basis of full consultation, we identify cooperation areas, priorities and models, and bring more Chinese investment and technologies to Pakistan, and more quality Pakistani products to the Chinese market and homes of Chinese households, thus realizing complementarity and winning cooperation. And staying committed to people's well-being. CPEC belongs to the people. It covers large areas and benefits a large population. Whether it is infrastructure such as power plants, roads and ports, or it is exchanges and cooperation in industry, science and training, CPEC always follows the people-centered approach and is committed to creating a better life for the ordinary people. These precious experiences come from practice, and we should cherish them. We believe that as long as we implement the guiding principles of President Xi's message and implement the important consensus reached between Premier Li Qiang and Prime Minister Xie Bas, China-Pakistan cooperation and CPEC in the next decade will make new progress in the next decade, and China-Pakistan relations will embrace an even brighter future. May Pakistan enjoy prosperity and its people happiness. May China-Pakistan friendship be everlasting. Chin Pak Dosti Zindabad. Thank you. Fei Chun Ganxie, thank you very much. Excellency, that was the Vice Premier of People's Republic of China, Excellency He Lifeng, and we are very honored to have you here in Pakistan. And as I mentioned, longevity, trust and fraternity are the phrases used to describe Pakistan-China friendship. This is such a unique and unprecedented relationship which has always ignited the imagination of our people.
Ladies and gentlemen, to celebrate this momentous occasion, the milestone of completing 10 years of CPEC, one of the salient activities is issuance of a commemorative postage stamp and a beautiful memento. The stamp will serve as a tangible and enduring tribute to the accomplishments made through the CPEC. Moreover, this memento will represent the enduring friendship and collaboration between the Iron brothers. Ladies and gentlemen, I am honored now to request the chief guest of today's ceremony, the Vice Premier of People's Republic of China, Excellency He Lifeng, and Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, to kindly come up on the stage and personally reveal the commemorative stamp and coin to mark the decade of China-Pakistan Economic Corridor. A big hand for both the dignitaries, ladies and gentlemen. This is a historic moment for CPEC. 10 years down the journey, and it's just the beginning. Ladies and gentlemen, these designs that will soon be revealed not only commemorate 10 years of CPEC, but the lasting friendship between the two countries. Ladies and gentlemen, may we now request the Excellencies, the Honorable Vice Premier, and the Honorable Prime Minister to kindly place their hands on the globe, and as they do that simultaneously, the digital reveal. For a historic moment, ladies and gentlemen, the decade celebration of China-Pakistan Economic Corridor. Senior leadership of Pakistan and China present here. Excellencies, may I request you to please step forward as we now have the commemorative memento being presented. Ladies and gentlemen, this memento has been prepared in Pakistan, and it captures the essence of the successful partnership for economic cooperation between the two countries. It's a beautiful reaffirmation of our commitment to strive together to make a community of shared future. And this picture will go down in history, absolutely, Siddha. May I now request both the dignitaries to kindly move to the commemorative envelope, which is designed by the Chinese side and has been brought all the way from Beijing to Islamabad. Both the dignitaries will sign on it and endorse the China-Pakistan Economic Corridor project. This selects the 4 representative projects, that is 1+4, initial layout of the China-Pakistan Economic Corridor, and highlights the long-lived China-Pakistan friendship. Ladies and gentlemen, a historic moment for Pakistan and China. We have the senior leadership, the Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, accompanied by the Vice Premier of People's Republic of China, Excellency He Lifeng. Ladies and gentlemen, this envelope has come from Beijing and indeed is a historic moment. With this, we would like to take this opportunity to thank His Excellency, Mr. He Lifeng, the Vice Premier of China. Thank you, sir, for being present here. And I would now like to request the Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif, to kindly address the August gathering. Ladies and gentlemen, put your hands together for the Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shehbaz Sharif. Bismillahirrahmanirrahim. Excellency Vice Premier He Lifeng, honorable members of the Chinese delegation, honorable ministers, excellencies, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good evening. Excellency, thank you very much for visiting Pakistan and have time to celebrate jointly Iron Brothers from China and Pakistan, the 10th anniversary of CPEC. This great journey of friendship between Pakistan and China started immediately after China won its independence
back in 1949. But this journey was accelerated through sincerity of purpose and commitment by many great Pakistani leaders, starting from late Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto, who made very valuable contribution in terms of promoting this friendship. And then, in between, all subsequent leaders were very committed to promote this friendship. And therefore, this is a unique friendship, a unique relationship where the entire spectrum of Pakistani nation, people from all walks of life, all political parties, all institutions, they are committed to this great friendship. And then in April 2015, Your Excellency, President Xi Jinping was very kind to visit Pakistan. Of course, that was a visit which was postponed earlier for reasons well known to us and not to be described here. Had that delay hadn't taken place, these CPEC projects would have blossomed and some of them would have been completed much earlier. In April 2015, this agreement of CPEC was signed between President Xi Jinping and Prime Minister Nawaz Sharif. And then we saw at lightning speed projects were undertaken and completed. This is still in our memory that at that point in time, power outages had crippling impact on our industry and agriculture. Our exports were damaged irreparably because foreign importers would not trust Pakistani exporters because we didn't have energy to manufacture those export orders. Our agriculture had become pale. Our industry had come to a grinding halt. And thousands of workers were out of jobs. Excellency, this was the time when CPEC came to Pakistan's rescue. And as you said, that some of the projects were completed in a record period of time. This was under the joint leadership of President Xi Jinping and Prime Minister Nawaz Sharif. I will not go into details because those have been very ably explained by you and Dr. Professor Chaudhry Ehsan Iqbal. Suffice it to say that an amount of $25 billion were invested during this period. Hundreds and thousands of job opportunities were created, and production and exports were enhanced. I think this was a game changer, and this was the result of the vision and commitment and friendship President Xi Jinping has for Pakistan and the people of Pakistan. And Vice Premier, you are a linchpin.
At that time, you were the chairman of NDRC. And I know for a fact, because I had dealt with you in those days along with my colleagues, you were very helpful to support CPEC projects speedily. And my friend, Vice Minister Sun Weidong, he was our ambassador, not only ambassador of China, but ambassador of Pakistan as well. He was very supportive. He was very helpful. I can go on and go on. And this story of great friendship will not end, but the night will fall. Vice Premier, we had other segments today in this ceremony. We had to drop a few of those because of devastating incident of terrorism which took place in Bajor yesterday. And our heart goes out to the families of the departed soul. And this is, again, a very important subject of our joint cooperation. We have to jointly deal with this menace. Pakistan has paid a huge price. Almost 80,000 Pakistanis have laid their life to fight this menace of terrorism, and we defeated it effectively years ago. And it is a great commitment and a great manifestation of our will to fight this menace till it is wiped out, not only from the face of Pakistan, but also in this region and in an extended way globally. Excellency, now we are entering the second phase of CPEC, which is even more interesting and extremely helpful in promoting investments, progress and prosperity in Pakistan and also in the region. And you have highlighted important areas of this second phase of CPEC, which is high quality development, which is growth corridor, special economic zones, livelihood corridor, innovation corridor, green corridor, and openness and connectivity. There is an effort, Your Excellency, to bypass Pakistan by some countries in this process of connectivity. And I have no doubts that Pakistan and China together will fill in the gap, and this corridor, which already has been established between North and South, will extend in many ways to include the entire region and also other parts of the world. Gwadar, you have rightly pointed out, was a few years ago was a small village. Today, it is a busy city with huge potential in times to come. Gwadar port will become very busy, and I think CPEC will ensure Gwadar one of the most busy ports in the region. And our government is placing due focus and efforts to develop this port with full speed and commitment. We have allocated sufficient resources. Electricity has now been available in Gwadar.
drinking water is available, and further developments are on the way as I speak. Excellency, Pakistan is going to turn around its economy by the grace of God through our multiple initiatives and programs. But let me, at this point in time, thank you and thank President Xi Jinping and thank Chinese government and people for supporting us at this critical juncture. Loan rollovers by Chinese banks, including Exim Bank, Bank of China, and other commercial banks, state-to-state safe deposits to the tune of billions of dollars in the last 4 months has been of immense help to us. And I can assure you from the core of my heart that myself, my colleagues sitting here, Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari, Finance Minister Hisab Dar, Planning Minister Ahsan Iqbal, and all other colleagues sitting here and government officials, and the people of Pakistan in the four nook and corner in this country will remain ever so grateful to you and President Xi Jinping for supporting Pakistan financially in this very difficult time. And we shall never forget this very kind generosity and favor of yours for all time to come. But I want to say and add something here. We want to move away from these loans and borrowed monies, sums of monies. We want to move away from having handouts, aid and doles. We really want to stand on our own feet. We really want to show to the world that our people are brave people. They have great tenacity, great energy, and they are capable of facing the most difficult challenge and yet survive. The discussion and negotiation with IMF has been one of those challenges. And together with your support and our brotherly country's support, we have sailed through this storm successfully. But now is the time for us to have a reflection, introspection, and pause, and to carve out our way forward, which will make Pakistan and Pakistani look decent, respected in the eyes of our friends and foes. And the only way forward is to emulate Chinese model of growth. Even today, with these very difficult circumstances around the globe, your annual growth is still around 5.5%, which is commendable. And of course, in time to come, it's going to further improve. Your Excellency, this is where we need your support. This is where we need your expertise and learn from your experience. It is not a joke to take 800 million people out of the pit of poverty. Today, they are great contributing hands in the development of China, just in a matter of 3.5 decades. It's no less than a miracle. It has not happened anywhere else in the world. And therefore, it has happened only through visionary leaderships, dynamism, and hard work and untiring efforts, and a journey of sweat and blood. I would be
extremely grateful that today we agree to announce joint working groups to evaluate this growth model and convert this into, under Pakistan's prevailing circumstances. And I want to assure you, this nation, 220 million people of Pakistan, all political parties, political leadership, military leadership, judiciary, doctors, engineers, on one thing there is total unanimity, that China is our true and most sincere friend. Here is the time that we should now make use of this opportunity, because time and tide wait for none. This is an opportunity we want to cash upon. I would like to request you and propose that let's constitute a joint committee to look into these matters and come up with a sound proposal, and which we can jointly implement with great speed. And I have no doubts, ladies and gentlemen, that Pakistan soon one day will stand on its own feet. We won't have to beg and borrow. We will generate our own resources through untiring efforts, as the Chinese have done. We will alleviate poverty as China did. We'll provide jobs as China did. And that will the biggest gift we can offer to our ancestors. That will be the biggest source of satisfaction to those millions who gave their lives for Pakistan. Ladies and gentlemen, let's celebrate this great day, this great event in this spirit, and inshallah we will be marching in that direction very, very speedily. Pakistan, China Dosti Zindabad, Pak-China friendship Zindabad. Thank you very much. Thank you very much. That was Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif. And we'd like to request you, sir, to give us about 5 more minutes of your precious time. Thank you very much. Have a seat. Ladies and gentlemen, as I mentioned before, it is very gratifying for us that Chinese brothers and sisters address people of Pakistan as Bathe, which means iron brothers. China is an all-weather friend. I would like to reiterate that. During all times, all seasons, all weathers, good or bad, China has always stood with Pakistan, whether it's economic collaboration, cooperation, whether it is military CPEC के 10 साल मुकम्मल होने पर कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और नायब वज़ीर-ए-आज़म चीन की मौजूदगी में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मुतालिक आपने जाना। यहाँ लेंगे एक ब्रेक। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में अवाम को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम करने का अज़्म कर लिया है। इसी मकसद के तहत LUH हैदराबाद में पीडियाट्रिक ICU और कार्डियोथोरैसिक सर्जरी डिपार्टमेंट कायम किया गया है। जिला शहीद बेनजीराबाद में बेनजीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। 7 में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ICU और 4 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स कायम किए गए हैं। लाड़काना में हादसात के शदीद जख्मियों के फौरी इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर कायम किया गया है। SIUT सक्खर में एडवांस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम काम कर रहा है। मेरा नाम सना है। सक्खर SIUT हॉस्पिटल में मेरा रोबोटिक ऑपरेशन हुआ है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से रोबोटिक ऑपरेशन SIUT हॉस्पिटल के लिए और बाहर के अवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। थैंक यू सो मच सिंध गवर्नमेंट। खिदमत में सबसे आगे सिंध। कौन करेगा इससे शादी? आसिम है ना।
इनको भी घूमने फिरने का बहुत शौक है। क्या? दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड करें। दुनिया भर से लाखों वेरीफाइड रिश्ते एक क्लिक पे पाएं और अपने जैसे लाइक माइंडेड सोलमेट से मिलें। दिल का रिश्ता, सबकी होगी शादी। पापा बैग, पापा मी। गुड जॉब। इतनी स्ट्रॉन्ग क्योंकि हमारे दांत स्ट्रॉन्ग हैं। यस, दांत। सोचो ये हमारे दांत हैं। दांत स्ट्रॉन्ग होंगे तो अच्छे से चबाएंगे, बॉडी को मिलेगा पूरा न्यूट्रिशन। इसीलिए कोलगेट मैक्सिमम कैविटी प्रोटेक्शन दांतों का खोया कैल्शियम लौटाए। जब दांत स्ट्रॉन्ग तो मैं स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। 2016 में नवाज शरीफ ने IMF प्रोग्राम को खैरबाद कह के पाकिस्तान की मईशत को इस्तेहकाम दिया। 2018 के बाद नाअहल ने मईशत तबाह की। पहले कहा कि खुदकुशी कर लूंगा, लेकिन IMF के पास नहीं जाऊंगा, मगर मईशत को तबाह करते हुए IMF के पास गया। फिर सख्त तरीन शराइत पर मुआहदा किया, फिर अपनी हुकूमत जाती देखकर अपना ही साइन किया हुआ मुआहदा तोड़ दिया और मईशत को डिफॉल्ट के दहाने पर ला खड़ा किया। कोई तरीका नहीं छोड़ा, हर तरीके से पाकिस्तान को बदनाम किया और 9 मई के वाकयात उसकी कड़ी है। लेकिन 9 मई को जो कुछ हुआ वो यही था कि पाकिस्तान को उस दबाव बर्बाद करने की वह पूरी घिनौनी साजिश थी ताकि पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम फेल हो जाए और पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अगर ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाते और खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता तो पाकिस्तान में श्रीलंका जैसे हालात पैदा हो जाते। पाकिस्तान आलमी मालियाती निजाम से कट जाता, हमारी करेंसी क्रैश हो चुकी होती, सनतें, कारोबार, दरामदात, बरामदात सब बंद हो जाते, मजदूर और नौजवान बेरोजगार हो जाते, न बिजली होती न ईंधन, हत्ता के दवाइयाँ तक नापैद हो जाती, महंगाई आसमान तक पहुँच जाती और आवाम का जीना मुहाल हो चुका होता। लेकिन शुक्र है वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में और अल्लाह के खास फजलो करम से IMF के साथ नया स्टैंड बाय मुआहदा हो चुका है। पाकिस्तान अब डिफॉल्ट के खतरे से निकल चुका। अल्लाह ताला को आपकी तरक्की और खुशहाली मंजूर थी। हमने अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत मजबूत और ठोस प्लान तैयार कर लिया है। SIFC ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान को उस मंजिल तक लेके जाएगा जिसके लिए आपके अजीम बुजुर्गों ने बड़ी अजीम कुर्बानियां दी। इंशाअल्लाह वो ख्वाब जरूर पूरा होगा। इत्तेहादी हुकूमत के 16 माह। रेस्क्यू, रिकवर, रिबिल्ड। पाकिस्तान के नौजवानों के सुनहरी मुस्तकबिल के लिए सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ला रहा है लर्न टू अर्न प्रोग्राम, जिसमें आपका हुनर आपको कमा के दे सकता है आपकी सुपीरियर शनाख्त। ICS और ICOM के तलबा और तालिबात के लिए दौरान तालीम ही 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने की गारंटी। हमेशा की तरह मिशन यकीनी और गारंटी टेस्ट सीरीज दिलाएगी इम्तिहान में 100% कामयाबी। आइए बनिए डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, IT प्रोफेशनल, वकील और सहाफी। एडमिशंस ओपन। सूफी सोप, वो दाग मिटाए जो कोई और न कर पाए। कम खर्च और उजली धुलाई के लिए सूफी सोप, स्पेशल क्वालिटी। लिख दे यार, पास है जब तेरे पॉइंटर वाओ। अब लाओ नया पॉइंटर वाओ। पॉइंटर तो बस स्टार्टर है। सूफी सोप, वो दाग मिटाए जो कोई और न कर पाए। कम खर्च और उजली धुलाई के लिए सूफी सोप, स्पेशल क्वालिटी। Reimagine your future, and now it is the time to reimagine your future, and now it's time. Punjab Colleges, admissions open. वो एनिवर्सरी पे तुमने जो डायमंड रिंग दी थी वो मुझसे कहीं गिर गई। अच्छा सुनो, कल अम्मी अब्बू आ रहे हैं, घर जरा जल्दी आ जाना।
ये ओ बहुत महंगा भी पड़ सकता था, पर दागों के डर से निकला ओ चलेगा, क्योंकि मेरे पास है प्रियो, जिसके 7 एंजाइम्स की ताकत के सामने हर गहरा दाग माने हार। इसीलिए तो मैं कहती हूँ लाइफ के हर ओ के लिए प्रियो। My pencil. Grip easy my pencil, sharp easy my pencil, colorful wonderful my pencil. अच्छी राइटिंग की पक्की बुनियाद डॉलर My pencil. My pencil. शुक्राना करूं अल्लाह का, सुनी दिल की दुआ। शुक्राना करूं अल्लाह का, सूफी मैं हुआ। सूफी, जो नाम है एतमाद का। परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग, रॉयल फैंस के संग। Experience the luxury of Facile Sanitary. Innovation for a better lifestyle. Stylish and glamorous fittings. Facile Sanitary for an elegant lifestyle. कीजिए ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शन और बन जाए कारों के मालिक। काबिले भरोसा खिदमात के लिए रावी एक्सचेंज, राब्ता मुस्कुराहटों का। दिल से दिल मिलने लगे, आपके घर और रिश्तों का चमकता रंग। डायमंड पेंट्स, पाकिस्तान नंबर 1 पेंट। सिटी हाउसिंग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की प्राइम लोकेशंस पर डिलीवर कर रहा है मास्टर प्लान्ड गेटेड कम्युनिटीज। सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, जेलम, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और खारिया में तमाम सहूलियात की मौजूदगी हमारी कामयाबी की तर्जुमान है और ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। पार्ले 24 कैरेट गोल्ड ग्लीम क्रीम ब्लीच, जो आपके नापसंदीदा बालों को ब्लीच करे। पाकिस्तान की पहली 24 कैरेट क्रीम ब्लीच, जो मेलानिन को कम करे और रंगत निखारे। पार्ले 24 कैरेट गोल्ड ग्लीम क्रीम ब्लीच। Get ready for the ultimate shopping experience. Insignia Summer End Sale is live now. You can enjoy up to 50% off on the entire stock. Visit our stores today or shop online at www.insignia.pk. जियो न्यूज क्लॉक के लिए ताउन किया है Stylo 152 Days of Summer 23. जो चाहूं वो पाऊं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा CPEC के तहत पाकिस्तान में 25 अरब डॉलर से जायद की सरमायाकारी आई, लाखों अफराद को रोजगार मिला। CPEC के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीब से खिताब। कहा CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं, जिससे खुशहाली का नया दौर आएगा। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लिफेंग ने कहा है कि CPEC से खित्ते में समाजी तरक्की का दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान में सड़कों के जाल बिछाए गए और CPEC मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर 100 रुपए का यादगारी सिक्का जारी। और अब कैपिटल टॉक। Sorry, I'm late. It's okay. दिन कैसा रहा? Just catching up. चाहे कुछ भी हो जाए, बाल रहे फिंगर कोम्ब रेडी। With Palmolive Naturals Healthy and Smooth Shampoo, बालों को बनाए इतना स्मूथ और मैनेजेबल कि आप करें बस फिंगर कोम्ब। न्यू डाल्डा स्टैंड अप पाउच, इजी टू pour, इजी टू कुक। हम माँ की बराबरी तो नहीं कर सकते, पर उसके एफर्ट्स को स्टैंडिंग ओवेशन तो दे ही सकते हैं। न्यू डाल्डा स्टैंड अप पाउच, अ स्टैंडिंग ओवेशन टू मदर्स। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग।
का सारा बिल जो है ना, इट इज ओनली टारगेटिंग पाकिस्तान तरीके इंसाफ। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। ये केस हतमी मराहिल में दाखिल है। आला अदलिया के दरवाजे खटखटाने से आपकी चोरी नहीं छुपेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत की मुद्दत अब ख़त्म होने में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। ये हुकूमत जा रही है, लेकिन एक बड़ी हैरानकुन बात यह है कि इस जाती हुई हुकूमत के दौर में भी गैर मुल्की सरबराहान और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान के दौरे कर रहे हैं और इस जाती हुई हुकूमत के साथ बहुत अहम मुआहदों पे दस्तखत भी कर रहे हैं। ये बड़ी एक अहम डेवलपमेंट है। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो जाती हुई हुकूमत के साथ मुआहदों पे दस्तखत हो रहे हैं, इनका क्या मुस्तकबिल होगा। और ये सारा कुछ एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब इलेक्शन के इनेकाद पर हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर नज़र आ रहे हैं, यानी कि मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में है, वो सारे चाहते हैं कि इलेक्शन इसी साल 2023 में होना चाहिए। लेकिन इलेक्शन को टारगेट करने के लिए दहशतगर्दी की एक नई लहर शुरू हो गई है। तो इस दहशतगर्दी की नई लहर के पीछे कौन हो सकता है? तो दो सवाल बड़े अहम हैं कि जाती हुई हुकूमत के साथ गैर मुल्की शख्सियात, सरबराहान ममलकत और अहम सरमायाकार दस्तखत कर रहे हैं, और इस जाती हुकूमत के बाद जो इलेक्शन होने हैं उनको रोकने के लिए दहशतगर्दी की नई लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। और इसके अलावा आप जान, ये जाती हुई हुकूमत जो है ये बहुत अहम लेजिस्लेशन भी करने की कोशिश कर रही है, बहुत अहम कानून बनाने की कोशिश कर रही है। तो इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए दाखिला, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, सेनेटर कामरान मुर्जा साहब जो कि रहनुमा हैं JUI फजलुर रहमान ग्रुप के, और हम उनके साथ ताज़ियत भी करते हैं। उनकी पार्टी के वर्कर्स जो हैं उनको कल बाजौड़ में निशाना बनाया गया। पूरी कौम उस पर गमज़दा है, रंजीदा है, और हम तमाम जो शोहदा हैं उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ भी करते हैं। सबसे पहले अताउल्लाह तारड़ साहब ये बताएं कि ये एक बड़ा अहम सवाल है कि ये जो आपकी हुकूमत है इसकी मुद्दत ख़त्म होने चंद दिन बाकी हैं, लेकिन गैर मुल्की शख्सियात आ रही हैं। कल इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा समिट हो रहा है, उसमें सरमायाकार भी आ रहे हैं। तो लोग आपके साथ मुआहदे कर रहे हैं, दस्तखत कर रहे हैं, उनका मुस्तकबिल क्या है? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए, हमारा हमेशा से CPEC के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर, जो हमारे बरादर ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात के ऊपर फोकस रहा है। और आपने देखा कि पिछले दौर में नियाज़ी साहब की हुकूमत में CPEC को गो स्लो किया गया, और जो $64 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई थी उस पर आपने देखा कि उसका क्या हाल किया गया। तो अब ये जो पिछला एक साल रहा है हमारी हुकूमत का, ये बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात की बहाली का साल भी रहा है, वो चाहे अरब ममालिक हों। आपने देखा कि अभी हाल ही में UAE के सदर और बादशाह, उनके भाई का इंतकाल हुआ, शेख मोहम्मद बिन जायद के भाई का। शहबाज साहब फ़ौरन वहाँ पे गए ताज़ियत के लिए। सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात चल रहे हैं, और नायब वज़ीर आज़म जो चीन के हैं उनका यहाँ पे आना इस टाइम पे मुझे याद दिलाता है कि एक शख्स जिसके दौर में चीनी सदर के दौरे को रोका गया धरनों की वजह से, और उसने अपने दौर में शदीद नुकसान पहुँचाया हमारे इन ताल्लुकात को, तो ये एक मुस्बत कदम है। और ये हमारी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक एतमाद की वजह ये है कि ये लोग एतमाद करते हैं और वो चाहती हैं कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे और इसमें बेहतरी आए। जो नियाज़ी साहब ने नुकसान पहुंचाया था, मेरा ख्याल अब उसकी तलाफ़ी का और उसके कफ़ारे का वक्त है। अच्छा, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब, हुकूमत तो जा रही है लेकिन गैर मुल्की शख्सियात आ रही हैं पाकिस्तान। क्या इन गैर मुल्की शख्सियात को ये यकीन है कि यही हुकूमत फिर दोबारा आ जाएगी इलेक्शन के बाद? ये तो देखें जी, वही बता सकते हैं मीर साहब, मैं तो नहीं बता सकता कि उनको यकीन है या नहीं है। लेकिन देखें, गवर्नमेंट को 1.5 साल तो हो गया है ना ऑलमोस्ट। इस वक्त भी इमरान खान, नियाज़ी साहब सबकी जो है ना जहनों पे इतने जो है सवार हो चुके हैं, उनके सिवा किसी को और कोई मौका ही नहीं मिलता। हम पार्लियामेंट में भी होते हैं, पार्लियामेंट में यही चीज़ें, हमने ये हो गया जी, हमने बड़ी चेंजेस लाई। अभी आपने देखें बिलावल साहब के जब टूर्स होते हैं, जब गिने जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि जी उन्होंने जो है पाकिस्तान को तनाई से निकाला। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान को क्या खुद को तनाई से निकाला है, क्योंकि पाकिस्तान वो आते नहीं ना, कम अज़ कम वो फॉरेन में होते हैं। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, फॉरेन के लोग आते हैं तो उनको पता होगा आपस में। अभी MOU साइन हुए हैं ना, कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुए नए। MOU तो आपको पता है कि आपको
जो सऊदी के वलीअहद हैं वो पहले भी आए थे, हमारी गवर्नमेंट में आए थे, उन्होंने MOU साइन किए थे ना। उनमें कितने जो प्रोजेक्ट्स हैं जिस पे कोई काम स्टार्ट हुआ। MOU अलग चीज़ होती है, प्रॉपर जो एग्रीमेंट वो अलग चीज़ होती है। इन्वेस्टर आते हैं अपने हिसाब से, वो आए हैं 2-4 दिन में, इलेक्शन होगी, पूरा पाकिस्तान इलेक्शन में के लिए वेट कर रहा है। जब इलेक्शन होगी, जो नई गवर्नमेंट आएगी तो यही लोग उनके साथ बैठेंगे, यही बैठेंगे ना जो अभी MOU साइन करेंगे। ये कोई किसी पार्टी की इफादत तो है नहीं, ठीक है, कि मतलब किसी पार्टी की बड़ी बात है। अगर इतनी पार्टी की इफिशिएंसी थी तो ये 14 महीने बिलावजा ज़ाया हो गए हैं ना। ये टूर पहले हो जाते, अभी 6 दिन पहले क्यों? तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी वजह नहीं है। सिर्फ 30 सेकंड के लिए देखिए, ये पाकिस्तान का मामला है, इस पे हम सियासत ना करें। $1 अरब अभी UAE की तरफ से आया, अकाउंट में आ गया ना। सऊदी वली अहद ने जो वादे किए वो पूरे साथ साथ किए, इमदाद भी वहां से आ रही है, डेलीगेशंस भी आ रहे, इसको मैं सियासत की नजर नहीं करना चाहिए कि हुआ कुछ नहीं। अच्छा कामरान, अच्छा मैं एक मिनट मीर साहब, मैं इसी चीज़ का आपको जवाब दे दूं। देखिए बात यह है कि अगर कोई मुल्क आपको लोन देता है ना, वो लेना चाहिए, कोई इशू नहीं, लेकिन लोन को ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करना वो पब्लिक का पाकिस्तान में बियर करना होता है। अगर UAE ने $1 बिलियन दिया है तो मैं इस शो से, मुझे माशाल्लाह आपकी एक जो स्टैंडिंग है उसमें मैं क्या बैठ के तबसरा करूं, माशाल्लाह आपको पूरा पाकिस्तान जानता है कि आपने कभी भी काफ़ी बहुत सारी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ नहीं करी। जो जीनियन चीज़ें होते हैं वो लाते हैं सामने। अभी आपको पता है ना KPT टर्मिनल जो इसी टाइम में दिया गया है, KPT में जो टर्मिनल है वो टर्मिनल कैसे दिया गया है UAE को? मैं जुल्फी बुखारी को मिलता तो बेहतर होता, वो सिराज अकबर के भाई को मिलता तो बेहतर होता, आप इनको मना वो न्याजी के किसी इन्वेस्टर को मिलता तो बेहतर होता। UAE को और सऊदी को हमें नहीं देना चाहिए, वो हमें न्याजी के इन्वेस्टर को जाए तो बेहतर है। मैं आपके शो में पहली मरतबा आया हूँ, मेरा अपना मिजाज है जी, मैं इस चीज़ों को पसंद मैं भी नहीं करता। जवाब इससे ज़्यादा दे सकता हूँ, मैंने दिया है ना कल असेंबली में जवाब, जो वहाँ गालियाँ देते हैं लोगों को, ये अच्छी बात नहीं होती। ये हम जो अगर इस पोजीशन पे पहुँच के हम किसी की बात नहीं सुन पाते तो ये इससे ज़्यादा कौन सी आदमी की कमजोरी हो सके? आदमी को सुनना चाहिए। मेरा मौक़िफ़ ये है, शहजाद अकबर हो कोई भी हो, मेरा उससे क्या ताल्लुक है? मैं सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ऑन मेरी टाइम्स में मेंबर हूँ, उसी में हमने सेक्रेटरी से पूछा कि आपने LNG टर्मिनल कैसे दिया। वो कह रहा है कि वो कंपनी जिसको 22 साल से कॉन्ट्रैक्ट था उसको रेट था $16 पर कंटेनर, अभी हमने दिया है $18। आपको पता है, आप अगर उनकी PICT वेबसाइट पे चले जाएं उस कंपनी की, वो कह रही है कंपनी कि हम $140 इस वक्त भी ले रहे थे पर कंटेनर। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ये ख्याल नहीं आया कि ये हमारे रिसोर्सेज हैं, हम उस पे जाते। ये तो नहीं है कहीं के $1 बिलियन लेके हम $1 बिलियन का यहाँ नुकसान करें। अच्छा कामरान मुर्जा साहब, ये जो इस वक्त विजिट्स हो रहे हैं इनकी टाइमिंग बड़ी अहम है, और इसके साथ ही यानी कि कल जब चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान आना था तो कल ही बाजौड़ में आपकी पार्टी के वर्कर्स कन्वेंशन पर एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद में आपके साथी जो हैं वो शहीद भी हुए। तो ये जो सारे जो वाक़यात हैं, यानी कि इलेक्शन आने वाला है और दहशतगर्दी के वाक़यात शुरू हो गए, और मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आपको एक पस मंज़र भी बता दूँ कि सिर्फ पिछले चंद महीनों में बहुत अहम वाक़यात हुए हैं। इस साल 30 जनवरी को पेशावर में पुलिस लाइन्स में एक मस्जिद में हमला हुआ, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पे शहीद हुए। 17 अप्रैल को स्वात में CTD थाने में धमाका हो गया, वहाँ पे भी 15 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। 20 जुलाई को खैबर की तहसील बाड़ा में एक कंपाउंड में हमला हुआ, उसमें भी 3 अफराद शहीद हुए। फिर 25 जुलाई को जमरूद की एक मस्जिद में हमला हुआ, वहाँ पे एक SHO दौरान अफरीदी शहीद हो गए, और कल ये बाजौड़ में एक हमला हुआ। तो ये जो टाइमिंग है, क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्शन को डिले करने की कोई कोशिश की जा रही है? देखिए 2-3 बातें हो सकती हैं मुमकिन तौर पे। मौलाना आज आ गए हैं, अपना दौरा उन्होंने मुख्तसर किया है, उसके बाद हम इस पे बैठे थे और हमने डेलिब्रेशन शुरू कर दी थी। 2-3 बातें मुमकिन हैं। एक मुमकिन वजह ये हो सकती है कि चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म जो आए हैं उस दौरे को सबूताज किया जाए और उसके लिए वही दिन तकरीबन जो है वो उन्होंने मुंतखब किया। एक बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि जमीयत उलमा इस्लाम को इस सिलेक्शन की कैंपेन से रोकना, क्योंकि अमन के नाम पे हमने ये कैंपेन शुरू की थी, इसका नाम बाकायदा अमन सा, और अमन में जो है ये फसाद डाला गया। और तीसरी बात ये हो सकती है कि ये पूरे सिस्टम को, पूरे इलेक्शन को जो है वो सबूताज किया जाए और इसको किसी तरह से मामले को आगे लेके जाया जाए। अब ये वक्त बताएगा कि अल्टीमेटली जिन लोगों ने ये प्लान किया उनके जहनों में क्या है, मगर बहरहाल इतना बड़ा नुकसान जो है पहुंचाया गया है अमन को, हमको और मुल्क को। ये मेरा ख्याल है कि इसकी कम मिसालें मिलती हैं। 50-55 लोग शहीद हैं और 200 लोग तकरीबन ज़ख्मी हैं, और हालत ये है
हालत ये है, मैं यहाँ बैठ के गवर्नमेंट पार्टी का एक कलाई हूँ, मैं गिला करता हूँ कि जिन हॉस्पिटलों में उनको पहुँचाया गया है वहाँ जो है ना वो ज़रूरत जो उसकी फ़र्स्ट एड का सामान है वो भी जो है ना वो मैसर नहीं है, ये हालत है। और वहाँ पे उनको शिफ्टिंग का कोई तरीक़ाकार नहीं है, उनका कोई और इस तरह से नहीं है, और वो बेचारे उसमें बहुत सारे लोग बाद में भी शहीद हुए हैं, ओवर ब्लीडिंग से शहीद हुए हैं। ये भी मसला है हमारे साथ। अच्छा अताउल्ला तारड़ साहब, क्योंकि आपके पास दाखिला का महकमा भी है, तो आपको लग रहा है कि अभी तो इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ, अभी तो डेट का भी ऐलान नहीं हुआ, और इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए कुछ मुल्क दुश्मन अनासर जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं? मेरा ख्याल है जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं उनको ये जो एक अमन कायम हुआ पिछले 6-7 महीने में, और एक फ़िज़ा बेहतर हुई, IMF के साथ मामलात जो हैं वो तय पाए, रुपया मुस्तहकम हुआ, कोई थोड़ा सा इस्तेहकाम इकॉनमी में आया, उनको ये सूट नहीं करता, तो इसलिए वो कुछ ना कुछ कार्रवाइयाँ करते हैं। मगर मुझे बड़ी उम्मीद है कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, पुलिस, ये सारे मिल के, हमने पहले भी इसका ख़ात्मा किया था, वो ज़रब अज़ब हो, रद्दुल फ़साद हो, अभी भी जो लोग इसके पीछे हैं उन तक पहुँचा जाएगा, उन्हें कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा, क्योंकि ये हमने जितनी कुर्बानियाँ वॉर ऑन टेरर में दी हैं, जितने हमारे सिविलियन, फ़ौजी, पुलिस वाले जितने शहीद हुए हैं, उनका खून इंशाल्लाह रायगा नहीं जाएगा, और ये कोशिश होगी कि इसको मिलजुल के इस मामले को जो है वो हल किया जाए। सैफुल्लाह भुट्टो साहब, आपको लग रहा है कि इलेक्शन जो है वो इसी साल हो जाएगा? देखें जी, इलेक्शन तो होने चाहिए लाजमी, ये तो कानूनी और आइन की रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो मेरे ख्याल में इलेक्शन में जो लोग चाहते हैं कि इलेक्शन न हो, तो उनको देखना चाहिए कि जब तक मुस्तहकम पाकिस्तान नहीं मिलेगा, वो इस्तेकाम तभी आएगा जब आपके इलेक्शन होंगे। पूरी नेशन जो है इसको देख रही है, तो इलेक्शन होने चाहिए। अच्छा। लेकिन देखिए, अफसोस की बात है, मैं तो मुर्तज़ा भाई के चीज़ों को आगे बढ़ाता हूँ कि बड़े अफसोस की बात है कि जिस भी एरिया में, जिस भी इलाके से अगर किसी पाकिस्तानी का खून बहता है ना, ये हम सब के लिए बड़ी बायस तशवीश बात है। हमें उस पर अफसोस है कि ये इतनी चीज़ें हुई हैं और नहीं होनी चाहिए। लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान की आप पोजीशन देखें, ये पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन हमें कम अज़ कम, हम भाई बैठे हैं, हम तो सेनेट में दोनों मोस्टली कोशिश ये करते हैं कि यार कम अज़ कम हम ये हाउस जो है ये फॉर पीपल ऑफ पाकिस्तान, फॉर पाकिस्तान, हम उस पर बात करें। पॉलिटिकल पार्टीज़ के एफिलेशन अपनी जगह, लेकिन देखें ये अलमिया है हमारे ओवरऑल मुल्क में, हुकूमत जिसकी भी हो, कि अगर फर्स्ट एड की सहूलतें भी ना हों तो हम कहाँ जाएंगे? हमें इन चीज़ों को सोचना चाहिए। हम बेशक सियासी बातें करें, इलेक्शन पे जाएं, इलेक्शन से भागें, कुछ भी करें, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के अवाम का फ़ायदा किसमें है, हमें क्या करना चाहिए, उसी तरफ जाना चाहिए। अच्छा अब्दुल साहब, एक मिनट सर, KPK में 10 साल हुकूमत जिसकी थी ना, आप जरा चेक कर लें, और उन्होंने कब छोड़ी है, और वहाँ पे अस्पताल बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? आप चेक कर लें। इस वक्त तो 6 महीने से तो निगरान हुकूमत नहीं, वो ठीक है, 6 महीने से निगरान हुकूमत होगी, मगर वो जो दूध की और शहद की नहरों का दावा किया जाता है KPK के अंदर, लेडी रीडिंग हॉस्पिटल पेशावर चले जाएं, रूलिंग अलायंस की पार्टियां हैं और वो आपस में लड़ रही हैं। अच्छा, लेकिन अब्दुल साहब, मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल बड़ी लेजिस्लेशन हो रही है पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में, और जिस हाउस के आप मेंबर हैं, यानी कि सेनेट के मेंबर हैं, तो वहाँ पे पिछले दिनों कुछ लेजिस्लेशन हुई है, उस पर आपकी पार्टी जो है उसकी क़यादत खुश नज़र नहीं आ रही है। एक इंक्वायरी शुरू कर दिया उन्होंने कि जनाब जो आपकी पार्टी के सेनेटर्स हैं उन्होंने हुकूमत के साथ मिलकर आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर करवा लिया। तो क्या आपकी पार्टी की क़यादत खुश नहीं है सेनेटर्स के साथ? मैं उस पर तो आपको ब्रीफ करता हूँ, सेनेटर्स के पार्ट पे, रोल पे भी जो सेनेट में हुआ है, हमारी पार्टी की क़यादत का क्या मौक़िफ़ है। लेकिन एक कमिटमेंट आप ये मीडिया में भी लाए ना, आप माशाल्लाह सीनियर साहब हैं, कि कम अज़ कम जब आप सवाल पूछें ना, जिससे पूछें वही बंदा जवाब दे, इसको तो करें कम अज़ कम। एक होते हैं ना बायलाज़ होते, अगर हम इस पोजीशन में आके हम इस पे नहीं आते, आप कम अज़ कम इसको तो करें, जो भी हो, जो भी तरमीम ले आए ना, आज़ादी इज़हार राय पे जो है वो कदगन लगा अगर आप बारी बारी बोल, मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने इनकी बारी खत्म है, मैंने जवाब दिया, अब वो जवाब भी काबिल कबूल नहीं है। ये चाहते हैं कि आईनी तरमीम ले आए ताकि इनके जवाब पे जवाब देने से मैं महरूम हो जाऊं। चले ख्वाहिश पूरी कर दें। चले, पता नहीं यही वजह है ना कि जब इस्लामाबाद में ये साहबाद और गए थे मोनाल पे, तो 6 लोगों को उन्होंने जेल में डाल दिया था IG ने। यही तो मुसीबत बनती है। मेरा सवाल नहीं, ये है मुसीबत बनती है ना, जब लोग बोलते नहीं। मेरा सवाल तो रह गया ना अभी। देखिए, नहीं, मैं जवाब देता हूँ। मैं तो आपके हाउस में बैठा हूँ। देखिए, अगर इस तरीके का माहौल आपके शो में नहीं होना चाहिए। किसी और साहब ही बहुत सारे बैठे हैं, माशाल्लाह आपकी एक इज्जत है ना, रेस्पेक्ट है, आपका मकाम है अपना। बात यह है कि जो आपने लेजिस्लेशन की बात की, हमारी पार्टी को देखें ना, इस वक्त है क्या, 6-7 दिन जैसे आपने कहा कि गवर्नमेंट के बचे हैं। आप डेली जाएं, कोई 10-20 बिल डेली आते हैं,
भाई आखिर 16 महीने से तो आपको गवर्नमेंट मिली है ना, तो ये आप उसी टाइम से स्टार्ट करते। जो अदलिया के बिल आए सारी चीज़ें ये आपको उसी वक्त याद होने चाहिए थे जब 10 अप्रैल को आपने टेक ओवर किया। वही उमर अता बदयाल साहब थे ना जिसके डिसीजन की वजह से आप आए, उसी वक्त से आप बिल लाना शुरू करते कि हमें उन पे भी ऑब्जेक्शन है, जिस पे भी। जहाँ तक बात आई हमारे पार्टी की, तो ये जो पिछला बिल आया है जो मतलब 27 तारीख को यहाँ हुआ, तो उस पर खान साहब का मौक़िफ़ ये था कि हमारी पार्टी ने या किसी ने कोई उसकी हिमायत की। एक्चुअली था क्या उस वक्त आपको याद है कि 26 तारीख को 25 को ज्वाइंट सेशन हुआ था, उसमें बड़ी अफरा तफरी हुई। जो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बड़े मशहूर हैं बाकायदा, उनके मतलब मिजाज में ऐसी एक इज़्ज़त वाली कोई बात होती नहीं, तो उन्होंने जब वहाँ खिताब किया तो उसी पे हमारे जो भी सेनेटर्स थे उन्होंने एहतजाज किया। मैं था नहीं उसी में, मैं मोहर्रम पे गाँव जाता हूँ, मैं लाड़काना था, तो उसी पे वो एहतजाज करते वो बाहर निकल गए। आपने भी देखा कि हमारे लोगों ने भी बात की, वो जो डिफेंस मिनिस्टर है उसने भी कहा, उसने कहा माफ़ी तो मुझे मांगनी नहीं, मैंने कभी सीखी नहीं। आपको पता है मीर साहब, माफ़ी तो इज़्ज़त वाले लोग मांगते हैं, बड़े दिल वाले मांगते हैं। माफ़ करना भी और माफ़ी मांगना भी, ये इज़्ज़त वाले बंदे की बात होती है जिसका दिल गुर्दा बड़ा होना चाहिए। गलती इंसान से होती है, लेकिन हमारे लोग जब चले गए बाहर लॉबी में तो ये बिल पास हो। आपको पता है कि बिल हमारे पास कैसे होते हैं, भाई भी बैठे 2 मिनट लगते हैं बिल पास होने में, ये इस पे तो मेरा ख्याल 1.5 मिनट लगा। मकसद वही है। तो वो बाहर वो लॉबी में बैठे थे, हमारे लोग अंदर नहीं थे। खान साहब को ये रिपोर्ट थी कि हमारे लोगों ने ये बिल जो है उसको, ऐसी कोई बात है। अच्छा, अब मैं कामरान मुर्दा साहब, आप उस हमारे शो में आए तो आपने कहा था कि उस दिन पीटीआई के लोग ज्यादा थे हाउस में, अगर वो चाहते हैं तो बिल को रोक सकते थे। लेकिन अब अबड़ो साहब आपके साथ बैठे हैं और अबड़ो साहब और आपके तलकात जो हैं उनकी नौयत क्या है वो मैं दिखाना चाहता हूँ कि अबड़ो साहब ने शुक्रिया अदा किया कल तकरीर करते हुए हाउस में। कैसे शुक्रिया अदा किया जरा सुने। मैं सलाम पेश करता हूं मैं अपने भाई सेनेटर कामरान मुर्जा साहब को। उन्होंने जो एक गलत रिमार्क्स थे हमारे फीमेल सेनेटर्स पे एक मिनिस्टर के, तो उन्होंने उठ के उनकी इज्जत भी की, उनसे माफी भी मांगी। वो उसका काम ही नहीं था। अच्छा, वो वाकई आपने एक बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हम तो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एहतजाज करके बाहर चले गए, उस दौरान में वो बिल मंजूर हुआ, तो क्या ये दुरुस्त कह रहे हैं? मैं तस्लीम नहीं करता। तो क्या असल सूरत हाल क्या है? मैंने उस दिन भी कहा था कि फाइन ट्यूनिंग है, आज भी कहता हूँ फाइन ट्यूनिंग। इनकी तो लग नहीं रही है फाइन ट्यूनिंग। ना हो, इनकी ना हो, इनकी और तारड़ साहब बोलना शुरू कर देते हैं। इनके दोस्तों की होगी, मगर मैं इस बात पे जो ना अभी भी कायम हूँ कि वो फाइन ट्यूनिंग थी। और देखिए, इतनी अहम जब बात होती है, अब फर्ज कर लीजिए कि ये वाले जिस पे कल जो इसमें आया था बिल, हम बाहर बैठे हुए थे, ये अपना इंतहापसंदी वाला, तो द मोमेंट ये आया है या उसके साथ आसपास शुरू हुआ है तो हम भाग के अंदर आ गए थे। अंदाज़ा होता है ना कि ये जब हम देख लेते हैं, एजेंडा देख लेते हैं, तो फिर उस वक्त जब निकल जाना या किसी भी बहाने से निकल जाना या ना आना, ये मेरा ख्याल है कि ट्यूनिंग। अच्छा, तो ये बताएं कि आप हुकूमत के इत्तेहादिए हैं और हुकूमत के वज़रा जो हैं वो उनमें आपकी पार्टी के भी वज़रा शामिल हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब भी उसी हुकूमत के वज़ीर हैं। तो ख्वाजा साहब ने एक बात की, तहरीक इंसाफ उस पर नाराज़ थी, आपने क्यों माफ़ी मांगी? देखिए, मैं एक बात संजीदगी के साथ समझता हूँ। ये जो बहनें हमारी बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, वर्किंग वुमेन, ये पहले भी लोगों की बुरी नज़रों का भी शिकार होती हैं, बुरी बातों का भी शिकार होती हैं। वो बड़ी हिम्मत करके आती है। वो आपकी हमारी बच्चियों के लिए शायद वो रास्ता बना के आइंदा के लिए, हमारी बच्चियाँ आज तक नहीं निकल रही मगर वो रास्ता बना रही हैं। तो सारी बुरी नज़रें, सारी बुरी बातें ये अपने पे लेती हैं। इसके बावजूद अगर हम उनको कोई खुदा न खास्ता उनमें कोई कमी खामी हो भी और हम उनको बुरा कहें तो वो उससे भी ज़्यादा बुरा है जो कि उनके अंदर खुदा न खास्ता हो। तो वो हमारी बहनें हैं, हमारी बच्चियां हैं, हमें उनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। और मैं समझता हूँ संजीदगी से कि अल्लाह पाक ने औरत को मर्द से ज़्यादा मोहतरम बनाया है, इसलिए उसको पर्दे का भी हुक्म। अब अबड़ो साहब, आपने कल जब गुफ्तगू हो रही थी तो आपने कहा कि ख्वाजा आसिफ साहब को पान खाना चाहिए, पान खाने का मशवरा दिया। वो पान क्यों खाएं? देखिए जी, वो मेरा जो कहने का मकसद था ना, देखिए आदमी कभी कभी ऐसी चीज़ें जज्बात में कर जाता है ना। एक तो होता है कि इत्तेफाक से, लेकिन ख्वाजा साहब के ये जो 16 महीने इनको जो वाकओवर मिला हुआ है ना कौमी असम्बली में, तो वहाँ तो आप जब जाएँ ना तो वहाँ ऐसा माहौल, क्योंकि पहले तो हम जाते नहीं थे जॉइंट सेशन में। जब हम एज अ सेनेटर जॉइंट सेशन में लास्ट को 3-4 मीटिंग में गए हैं तो वो जो स्पीकर साहब है किसी को बोलने नहीं देते, तो वहाँ जब जाएँ ना तो वहाँ एक अजीब सा माहौल होता है। एक बंदा उठता है, वो 5-6 गालियां देता है, दूसरा कहता है वाह 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 कमाल हो गया। मतलब ऐसे एक दूसरे को सिर्फ दाद देनी है। किस पे? अपोजिशन है नहीं,
बंदे हैं नहीं कि जो बात करें। भाई ठीक है, जो हमारी जो समझेंगे सो कॉल्ड अपोजिशन है, समझेंगे 20 लोग जो हमारे मुनारिफिन हैं वो बैठे हैं, उनमें से बंदे उठते हैं, वो भी उनकी हिमायत करते हैं। तो वहाँ ये माहौल था। उसी दिन भी ये हुआ कि ख्वाजा साहब जब स्टार्ट होता है तो वहाँ चुप होने का नाम नहीं लेता। लेकिन मुझे अफसोस इस पर तो नहीं हुआ, मैं उस वक्त से कोई 5-6 मिनट लेट से आया, जब वो पहले ही अपना शो कर चुके थे। उसके बाद जो है वो आए अपने अयाज सादिक साहब। आप यकीन करिए इतनी सीनियर लीडरशिप, आपको पता है यहाँ जैसे पीपल्स पार्टी का एक इमेज है ना कि यहाँ उनकी बड़ी बड़ी लीडरशिप है, उनका एक रोल है, डेमोक्रेटिक जो उनका चेहरा है। लेकिन आप सिंध में जाएं तो टोटली डिफरेंट है उनका जो बिहेवियर पब्लिक के साथ। तो यहाँ भी अयाज सादिक साहब, उसका भी एक मतलब इमेज है कि भाई एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी है, लेकिन वो भी उसी डगर पे चल पड़े जैसे वो ख्वाजा आसिफ थे। तो उसी पे मैंने उनको कहा कि वो एक इंडियन फिल्म थी, मैंने उसका हवाला भी दिया। आपने देखा है जब आदमी पान खाता है ना तो मुंह भर जाता है, तो आदमी बोलने के पोजीशन में नहीं होता, तो जबान कंट्रोल में रहती है। बजाय कि इस पे अभी पूरी दुनिया उसको जो है कितनी मलामत उस पे हुई है, आपने देखी है पूरी दुनिया से। मैं तो नहीं ना, देखें आप पीटीआई को छोड़ दें, किसी को छोड़ दें, ओवरऑल कोई भी महजब इदारा इसको बर्दाश्त करेगा। हम वैसे पीटीआई में भी कुछ लोगों को पान खाने का मशवरा देना चाहिए। सबको खाना चाहिए, है ना? सबको खाना चाहिए। बात यह है कि इज्जत आबरू के साथ बात करना कम से कम पार्लियामेंटेरियन पे फर्ज है। अब मुझे पता है कि अब आपने जवाब देना है लेकिन मैं आपके पास आता हूँ एक वक्फे के बाद। सिटी हाउसिंग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की प्राइम लोकेशंस पर डिलीवर कर रहा है मास्टर प्लान्ड गेटेड कम्युनिटीज। सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, जेलम, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और खारिया में तमाम सहूलियात की मौजूदगी हमारी कामयाबी की तर्जुमान है और ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। अब घर हर एंगल से परफेक्ट। GFC, बेहतरीन पे यकीन। जादू का चिराग लेके उड़ा चला जाए रे। सिंजेंटा इज़ाबियॉन दे फसल को फौरी तवानाई और ग़िज़ाइयत। इज़ाबियॉन है जादू का चिराग। ब्राइट साहब ब्राइट कर देगा ना? नहीं? हाँ, पर नया ब्राइट कोरमे से कड़ाही तक हर दाग वाइप कर देगा। क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। एक बात मानिए, आगा स्टील का सरिया अपने घर की तामीर में इस्तेमाल करें। तो ऑफिसर असल सरिया इलेक्ट्रिक आर्क बर्नस से बनाया जाता है। आगा स्टील हर बार सना रेडी हो गई? फुप्पो और सब आते ही होंगे। रेडी अम्मी। वाह, बड़ा ग्लो है चेहरे पे। पर ये कोट के कपड़े? आज कोट केस है ना अम्मी। इतने सालों बाद फुप्पो से ऐसे मिलोगी? तो उन्हें भी देखने दे, चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। ग्लो एंड लवली, इसके मल्टीविटामिन्स गहराई तक जाएं, दाग धब्बे घटाएं, दे अंदर से ग्लो। वाह, मलिक फैमिली की पहली लॉयर। चेहरे और कामयाबी दोनों का ग्लो। दो कतरे पीने से कोई बच्चा रह ना जाए, कोई रह ना जाए, कोई रह ना जाए। कल के सहारों को ना ऐसे बेसहारा छोड़े, उम्र भर की माजूरी के रास्ते पर ना मोड़े। अपने पैरों पर चलकर हर बच्चा कदम बढ़ाए, दो कतरे पीने से कोई बच्चा रह न जाए, कोई रह न जाए, कोई रह न जाए। मेरे देश का हर शहर हर गांव है इसका निशाना, लाजिम है इस खतरे से अपने बच्चों को बचाना। क्यों एक गलती सारी उम्र की माजूरी कहलाए, दो कतरे पीने से कोई बच्चा रह न जाए, कोई बच्चा रह न जाए। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। हुकूमत
सिंध ने सूबे भर में अवाम को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम करने का अज़्म कर लिया है। इसी मकसद के तहत LUH हैदराबाद में पीडियाट्रिक ICU और कार्डियोथोरैसिक सर्जरी डिपार्टमेंट कायम किया गया है। जिला शहीद बेनजीराबाद में बेनजीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। 7 में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ICU और 4 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स कायम किए गए हैं। लाड़काना में हादसात के शदीद जख्मियों के फौरी इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर कायम किया गया है। SIUT सक्खर में एडवांस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम काम कर रहा है। मेरा नाम सना है। सक्खर SIUT हॉस्पिटल में मेरा रोबोटिक ऑपरेशन हुआ है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से रोबोटिक ऑपरेशन SIUT हॉस्पिटल के लिए और बाहर की आवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। थैंक यू सो मच सिंध गवर्नमेंट। खिदमत में सबसे आगे सिंध। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। पाकिस्तान के नौजवानों के सुनहरी मुस्तकबिल के लिए सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ला रहा है लर्न टू अर्न प्रोग्राम, जिसमें आपका हुनर आपको कमा के दे सकता है आपकी सुपीरियर शनाख्त। ICS और ICOM के तलबा और तालिबात के लिए दौरान तालीम ही 50,000 से 1 लाख रुपए कमाने की गारंटी। हमेशा की तरह हमारी टॉपर टेस्ट सीरीज बनाएगी बोर्ड के इम्तिहान में पोजीशन यकीनी, और गारंटी टेस्ट सीरीज दिलाएगी इम्तिहान में 100% कामयाबी। आइए बनिए डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, IT प्रोफेशनल, वकील और सहाफी। एडमिशंस ओपन। सिटी हाउसिंग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की प्राइम लोकेशंस पर डिलीवर कर रहा है मास्टर प्लान गेटेड कम्युनिटीज। सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, जेलम, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और खारिया में तमाम सहूलियात की मौजूदगी हमारी कामयाबी की तर्जुमान है, और ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। हुकूमत सिंध ने सूबे भर में अवाम को सेहत की तमाम सहूलियात फराहम करने का अज़्म कर लिया है। इसी मकसद के तहत LUH हैदराबाद में पीडियाट्रिक ICU और कार्डियोथोरैसिक सर्जरी डिपार्टमेंट कायम किया गया है। जिला शहीद बेनजीराबाद में बेनजीर इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है। 7 में सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में ICU और 4 जदीद ऑपरेशन थिएटर्स कायम किए गए हैं। लाड़काना में हादसात के शदीद जख्मियों के फौरी इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर कायम किया गया है। SIUT सक्खर में एडवांस रोबोटिक सर्जरी सिस्टम काम कर रहा है। मेरा नाम सना है। सक्खर SIUT हॉस्पिटल में मेरा रोबोटिक ऑपरेशन हुआ है। सिंध गवर्नमेंट की तरफ से रोबोटिक ऑपरेशन SIUT हॉस्पिटल के लिए और बाहर की आवाम के लिए एक बेहतरीन तोहफा है। थैंक यू सो मच सिंध गवर्नमेंट। खिदमत में सबसे आगे सिंध। ये कौन संभालेगा? अब रॉयल स्मार्ट लाइफ टाइम गारंटी फोन पे। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। जादू का चिराग लेके उड़ा चला जाए रे। सिंजेंटा इज बियॉन्ड दे फसल को फौरी तवानाई और ग़िज़ाइयत। इज बियॉन्ड है जादू का चिराग। अगर स्टील ऑफिसर असल सरिया जो इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस से बनाया जाता है। अगर स्टील हर बार 80। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। नौजवानों के लिए आला तालीम सिंध हुकूमत का मिशन, जिसके तहत सूबे भर में नई यूनिवर्सिटीज का इजाफा किया गया है, जिनमें शेख अयाज यूनिवर्सिटी शिकारपुर, सक्खर IBA यूनिवर्सिटी,
बेगम नुसरत भुट्टो विमेन यूनिवर्सिटी सक्कर, Orod University of Art, Architecture, Design and Heritages, Sakkar, Benazir Bhutto Shahid University of Technology and Skill Development, Khairpur, Shahid Benazir Bhutto University of Veterinary and Animal Sciences, Sakrand, University of Sufism and Modern Sciences, Bhitcha, Shahid Allah Bakhsh Sumro University of Art, Design and Heritages, Jamshoro, बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी शामिल है। आला मयारी तालीम हमारा अज़्म, खिदमत में सबसे आगे सिंध। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। बदलते मौसम में बीमारियां तो आती हैं, इनसे लड़ने और बचने के लिए चाहिए एहतियात ज़्यादा। यही तो है सेहत का वादा। बदलते मौसम में डेंगू बुखार से बचें, अपने घर का माहौल खुश्क और साफ रखें। खड़े पानी में ही डेंगू लार्वा पैदा होता है। गमलों और परिंदों के बर्तन में पानी जमा न होने दें। रूम कूलर का पानी खुश्क करें। फ्रिज की ट्रे को साफ रखें। कमरों के अंदर मैट, कॉइल और स्प्रे का इस्तेमाल करें। पूरी आस्तीन वाली कमीज या शर्ट पहने। हुकूमत पंजाब। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदीद। अच्छा, अब तारड़ साहब, आप इनसे पहले इजाजत ले लें कि मैं बात करूंगा तो फिर इनकी तबीयत पे गिरां गुजरेगा। पहली बात तो ये है कि चेयरमैन सेनेट के साथ जो इनकी सेटिंग है बहुत अच्छी सेटिंग है और ऐसी होनी चाहिए। आपकी सेटिंग नहीं है? हमारी है। मैं तो कह रहा हूँ चेयरमैन सेनेट के साथ हमारी अच्छी सेटिंग है। मैं तो डिनाई नहीं करूंगा, ना मैं झूठ बोलूंगा आपके सामने बैठ के। आपकी भी सेटिंग है, उनकी भी है। उनकी भी है। इसका मतलब है बहुत अच्छा चेयरमैन सेनेट है। मसला ये है ना, जिसकी सेटिंग हुकूमत के साथ भी है, अपोजिशन के साथ। मसला ये है कि इन्होंने अपने लीडर को इस पे धोखा दिया। इन्होंने कहा कि हम बिल को अपोज करेंगे। अब गैर मुल्की दौरों में नाम डलवाने होते हैं, कमेटियों में नाम डलवाने होते हैं, 100 मरात हैं जो चेयरमैन के दफ्तर से लेनी होती है। अब चेयरमैन का दफ्तर एक अच्छी जगह, सब लोग आते जाते हैं वहाँ पे। अब क्योंकि लॉबी में जाने का मकसद क्या था, अगर तादाद ज़्यादा थी तो आके बिल को अपोज करते ना, खड़े होते सामने, लीडर को और बात की। वहाँ पे ये छोटी छोटी मरात के लिए बैठ के चेयरमैन सेनेट के कहने पे लॉबी में चले गए, बड़ी अच्छी बात है, मगर इसको तस्लीम करें, इतना हौसला रखें। कल तो पीटीआई, जेयूआई, आपकी पार्टी के इरफान सिद्दीकी साहब सारे के सारे ही वो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी के खात्मे के बिल की मुखालफत कर रहे थे। लेकिन उस पर ऑब्वियसली मुशावरत होनी चाहिए थी। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि वो मुखालफत उन्होंने गलत की, उनको मुशावरत होनी चाहिए थी। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें मामला डिस्कस होने चाहिए थे, मगर बात सीधी करनी चाहिए। ये कहना हमें पता नहीं लगा, हम लॉबी में बैठे थे। आप किस बात के लॉ मेकर हैं कि आप लॉबी में बैठे रह गए, वहाँ पे बिल भी पास हो गया? आपको तो हाउस में विजिलेंट होकर बैठना चाहिए था ना। आपकी पार्टी ने आपको इसलिए मैंडेट दिया है, इसलिए सेनेट की टिकट दी है कि आप लॉबी में बैठे रहे सारा दिन, जाके करते अपोज वहाँ पे खड़े होके। तो ये देखें ना, बात को तस्लीम करें, गलत बयानी मत करें। कहीं कहीं हमारी चेयरमैन सेनेट से बात हुई भी थी तो हमने कहा था कि हम बिल्कुल चुप कर देंगे। तो इसका मतलब है कि अबड़ो साहब के चेयरमैन सेनेट जो है उन्होंने आपके साथ कोई सेटिंग की हुई थी बकौल इनके कि ये आपने बिल पास करवाना है, इसकी मुखालफत नहीं करनी, और बिल पास हो गया। मीर साहब नौज़बिल्ला पीडीएम वाले लोग ऐसे बात करते हैं जैसे मतलब कोई इन पे वही नाजल होती है ना। तो वास्तव बात ये है, आप वहाँ जाएं, आप हाउस में आपके बाद रिकॉर्डिंग होगी ना, मिल जाएगी आपको। हाँ। कोई ढकी छुपी बात नहीं। आपके दोस्त वहाँ बैठते हैं जो कवरेज पे आते हैं ना। नंबर 1 के मैंने जैसे भाई ने भी कहा, मैं तो उसी दिन था नहीं, मैंने कहा मैं तो पहली मुहर्रम से 10 दिन जाता हूँ गाँव पे। मैं उसी दिन यहाँ से निकला हूँ 26 तारीख को शाम को। एक पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग थी, मैं वो मतलब अटेंड करके फिर मैं वहाँ से निकला हूँ। बात ये है, लेकिन मैं आपको वैसे याद मैं आता हूँ एडिशनल, मैं आपको सॉरी बताएं, इंटरप्ट कर रहा हूँ। याद दिलाना है सिर्फ कि चेयरमैन सेनेट ने ये बाकायदा हाउस से पूछा कि मैं बिल कमेटी को भेज दूँ या इसको मैं पास करवाऊँ। तो जिन लोगों ने कहा कि पास करवा दें, तो वो, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता आपकी पार्टी के सेनेटर से, कम से कम 3-4 के तो मैं नाम जानता हूँ। मैं प्रेस गैलरी में बैठा हुआ था, वो कह रहे थे हाँ जी, बड़ी ज़ोर से कहा। आप नहीं थे हाउस में, ये आप। अच्छा, मैं उस पर आता हूँ। पहली बात तो ये है कि हम मेजॉरिटी में थे, जो कह रहे हैं दोस्त ना कि मेजॉरिटी में हम थे, तो वो आपको वीडियो से लग जाएगा कि कितने दोस्त थे, 3 थे, 4 थे, 5 थे। वो मैं उस वक्त था भी नहीं। मैं कल पहुँचा हूँ सुबह सवेरे 9:30 बजे, 10 बजे हमारी लाड़काना से 14 घंटे की ड्राइव होती है। तो वहाँ तो कोई एयरपोर्ट है नहीं कि इस्लामाबाद के लिए। मैं बाय रोड पहुँचा हूँ 9:30 बजे, 10:30 बजे, 12 बजे सेशन था। जहाँ तक बात है कि अगर बिल था अच्छा,
तो फिर तो उनको किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ट्यूनिंग है या कोई चीज़ है। वैसे तो हुकूमत ने तो उसकी हिमायत की है ना, तो इसमें कौन सी कबात अगर उनको है। बाकी पार्ट है कि पीटीआई ने कैसे उनको अपोज क्यों नहीं किया। तो जहाँ तक चेयरमैन की बात है, मैं आपको बताऊँ, अभी भी आप चले जाएं, अगर हम मेजॉरिटी में उसी वक्त बैठे हैं ना, इस वक्त वीडियो निकल आए 2, 3, 4, अगर 20 सेनेटर हमारे हैं, उधर 5 सेनेटर हैं, तो फिर तो बात बनती है ना। तो वो भी हो सकता है, उसमें दोबारा आप प्रोग्राम बुलाएं, सारे दोस्त स्वयं आ जाते हैं, उस पर डिस्कस कर लेंगे। जहाँ तक बात है कि जी हमने चेयरमैन से बैठ के जो है वो नेगोशिएट किया, भाई चेयरमैन है, आपकी गवर्नमेंट है ना, छोटा छोटा बिल भी आपने नहीं छोड़ा, छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब आप आए अदलिया की तजलील करने के लिए तो जजेस को आपने कोर्टों तो छोड़े, आपने असेंबली में बैठ के गालियाँ दी। आपको ऑब्जेक्शन हुआ एक लोअर कोर्ट की जज पे कि भाई उसको क्यों कहा गया, उस पर आप तो लोग आए, लेकिन जब आप सब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर उनकी तजलील की, आपको याद नहीं आया। तो चेयरमैन सेनेट जो है, ये सबको पता है ना, इस वक्त जो पीटीआई के अलावा सब हुकूमत में है, तो क्यों नहीं आप चेयरमैन सेनेट को चेंज करते? आप चेंज करते? इतनी हिम्मत है तो बताए ना। हिम्मत आप लोगों में है नहीं। आप हमें बैठ कर कहते हैं कि हम चेयरमैन से मैनेज हैं। भाई चेयरमैन के वोट हैं 12 जो बाप पार्टी के, टोटल 72 मेंबर्स हैं इस वक्त हुकूमत में, 12 निकालें फिर भी 60 बनते हैं। अगर बाप वाले वोट नहीं दे, आप लाए ना, आपकी इतनी हिम्मत तो चेयरमैन की जो पार्टी है, मैं उस पर बताऊं जो आपने कहा। नंबर 2 बात कि जी हमें लालच होती है कमेटीज की, इनकी शायद ये अभी जो है ना, ये मिनिस्टर या एडवाइज़र बने हैं, अभी इनको पता नहीं कि आगे बनते हैं या नहीं बनते, इनको इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको पता है कि जब सेनेट का इलेक्शन होता है, उसी के बाद हम दोनों भाई एक ही टेन्योर में आए हैं, 2021 में हम आए हैं। होता क्या है, सेनेट का एक प्रोसीजर होता है कि जब सेनेट नया आ गया तो उसके बाद नई कमेटीज़ जो हैं वो फार्म होती हैं। वो पार्टी की अपनी जो स्टैंडिंग होती है, पार्टी के जो वोट होते हैं, उसी पे उनकी नुमाइंदगी देते हैं उनको। नंबर 2, उसी में डिसाइड हो जाता है कि कौन सा मेंबर किस कमेटी में जाएगा, किसको कौन सी कमेटी मिलेगी। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो ये चेयरमैन ने कोई फेवर नहीं दी? नहीं, फेवर की बात ही नहीं है इसमें ना। आप देखें ना, कोई भी हुकूमत में हो या अपोजिशन में, कमेटीज उनको मिलती हैं अपनी पार्टी की स्ट्रेंथ के हिसाब से। जितनी उनकी नुमाइंदगी होगी उतनी उनको कमेटीज मिलती है, मेंबरशिप मिलती है। तो इसमें फायदे कौन से हैं? अच्छा, ये तो सही कह रहे हैं ये कामरान मुर्जा साहब, ये बात इनकी सही है। मैं दोनों की बात से इख्तलाफ करता हूँ। चेयरमैन बेचारा कोई ट्यूनिंग नहीं कर सकता, और चेयरमैन ने कुछ नहीं किया होगा, बस मैं इतना ही कहूँगा। अच्छा, तो अब तो चेयरमैन की जो पार्टी है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप कहा जाता है, अब तो उस पार्टी के लोग जो हैं वो मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। तो ये कोई सेटिंग है? सेटिंग होती है, और अगर वो बलूचिस्तान से जा रहे हैं तो मैं तो देखिए, मेरा तो इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो पहले पीपल्स पार्टी में जाने का ऐलान कर चुके और अब वो मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं। उसमें ऐसा ही है। उसमें किसी एक ने मुझसे फ़ोन करके रब्ता किया, अभी मेरी रात को उसके साथ सेटिंग भी है, तो उसने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा कि यार कि मैं पहले पीपल्स पार्टी में गया था, अब मैं मुस्लिम लीग नून में जा रहा हूं, तो मैं क्या करूं? कि ये नहीं, दोस्त ये कह रहे हैं। तो मैंने उसको कहा कि तुम देखो, फ़ायदा तुम्हारा अल्टीमेट फ़ायदा किस में हो सकता है, तुमने आइंदा इलेक्शन भी लड़ना है और इलेक्शन जीतना भी है। तो उसने कहा यार फ़ायदा तो आपके साथ बनता है, एक सीट ऊपर वाली आप ले लो, नीचे वाली मेरी तो JUI के साथ। जी। अच्छा, तो कहते हैं बस ठीक है, फिर बैठेंगे। अच्छा, तो वो बहरहाल जा रहे हैं। उनको पहले शायद उनका अंदाज़ा ये था कि एक पार्टी ए मैं नाम लेता हूँ, पार्टी ए जो है उसमें फ़ायदा होगा। कुछ साथी उधर पार्टी ए में चले गए। अच्छा, अब इसमें पार्टी बी के लिए भी जो है इसी तरह से ये, यानी कि ये एक मजाक नहीं बन जाएगा कि जो बाप पार्टी के लोग थोड़ा अर्सा पहले पीपल्स पार्टी में जिन्होंने शमूलियत का ऐलान किया, अब 2 या 2.5 महीने के बाद वो मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। तो ये इसकी क्या ज़रूरत है आपको? देखिए, एक तो मैंने ख़त देखा पिछले दिनों, बाप पार्टी की तरफ से लिखा गया था आसिफ अली जरदारी साहब को, कदूस बुदिंजो साहब ने लिखा, वो ख़त लिखा था। वो उनकी अपनी मर्जी। देखिए, सियासी सफबंदी हमेशा इलेक्शन से पहले होती है। जब गवर्नमेंट घर जा रही हो और नई सियासी सफबंदी हो रही हो, तो जोड़ तोड़ सियासत का हिस्सा है। सियासत में दरवाजे और खिड़कियाँ जो हैं वो खुले रखने चाहिए और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमने अच्छा सियासी जोड़ तोड़ किया, जिस दरवाजे, खिड़कियाँ और रोशनदान है, रोशनदान भी खुले रखने चाहिए। सियासत है, ताकि उसे फेंका जा सके, किसी को फेंका जा सके। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। सिटी हाउसिंग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों की प्राइम लोकेशंस पर डिलीवर कर रहा है मास्टर प्लान्ड गेटेड कम्युनिटीज। सिटी हाउसिंग गुजरांवाला, जेलम, सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और खारिया में तमाम सहूलियात की मौजूदगी हमारी कामयाबी की तर्जुमान है और ऑन टाइम डिलीवरी
हमारी पहचान है। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। CPEC, कामयाबी के 10 साल, पाक चीन दोस्ती की रोशन मिसाल, अंधेरों से निजात के सफर में पेश पेश, मुलाजमत के लाखों मौके, अरबों डॉलर का रेवेन्यू और हजारों मेगावाट बिजली, खित्ते में ताउन, तफहीम और खुशहाली के नए रिश्तों की बुनियाद, 25.4 अरब डॉलर की नई सरमायाकारी और पाकिस्तानी इंफ्रास्ट्रक्चर में जिद्दत। CPEC, एक नए अज़्म से आगे बढ़ता हुआ। गुज़श्ता 10 साल में CPEC के तहत 510 किलोमीटर तवील मोटरवेज, 932 किलोमीटर सड़कें, 886 किलोमीटर तवील हाई ट्रांसमिशन लाइन, 8000 मेगावाट बिजली, फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट और मास ट्रांजिट जैसे मंसूबे मुकम्मल किए जा चुके हैं। वजारत मंसूबा बंदी, तरक्की और खुसूसी इक़दामात, हुकूमत पाकिस्तान। रॉयल स्मार्ट लाइफस्टाइल, AC/DC इन्वर्टर फैंस, परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। और अब सिटी हाउसिंग ला रहा है पेशावर में महदूद रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स आसान अक़सात पर, जो पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर दिए जाएंगे। बुकिंग के लिए अभी राब्ता करें। सिटी हाउसिंग, द गोल्ड स्टैंडर्ड लिविंग। It's a Cheetos thing. The crunch is just right. It's a Cheetos thing. It's a Cheetos thing. ये क्या हो रहा है? New Cheetos tubes and poppers. Try now. कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। और जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि एक तरफ हुकूमत जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सी गैर मुल्की शख्सियात और इन्वेस्टर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। और आज हुकूमत के वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने एक फ़िगर दिया है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो मादनियात हैं उनकी जो वर्थ है वो 6.1 ट्रिलियन डॉलर। ये वही फ़िगर है जो थोड़े दिन पहले जब हमने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मोहम्मद खेल में एक जो कॉपर की साइट थी जहाँ से माइनिंग हो रही है, उस साइट पे हमने वहाँ के इंजीनियर्स के साथ जब गुफ्तगू की थी तो उन इंजीनियर्स ने भी हमें यही एक फ़िगर दी थी। तो क्या ये जो फ़िगर है ये हुकूमत पाकिस्तान की बाकायदा एक सरकारी फ़िगर है? इस पर हम मज़ीद बात करते हैं, लेकिन इससे पहले ज़रा ये सुन लीजिए कि मुसद्दिक मलिक साहब क्या कह रहे हैं। बता रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर, और आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान के पास 6 ट्रिलियन डॉलर्स के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। पाकिस्तान की सिर्फ मादनियात जो हैं उनका वैल्यू एडिशन नहीं, यानी एक अगर धात निकलती है उसमें से कितनी गूगल्स निकलेंगी या उसमें से कितने एप्पल निकलेंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मट्टी जो खोद के निकालनी है पाकिस्तान की मादनियात, उनकी कीमत 6.1 ट्रिलियन डॉलर। अच्छा, तो इन्होंने भी 6.1 ट्रिलियन डॉलर की बात की है। ये जो 2021 में हुकूमत पाकिस्तान का जियोलॉजिकल सर्वे जारी हुआ था, ये फिगर वहाँ से आई है। और ये जो जियोलॉजिकल सर्वे है ये आपको स्क्रीन पे इसका एक शॉट नज़र आ रहा है। तो ये 2021 का फिगर है जो अब 2023 में इसको सरकारी शख्सियात भी इस फिगर को कोट कर रही हैं। तो अताउल्ला तारड़ साहब, ये तो आप माने कि 2021 में जिनकी हुकूमत थी उन्होंने जो फिगर दी वो फिगर दुरुस्त थी, गलत नहीं थी। देखिए, फिगर देना कोई कामयाबी नहीं है। रेकोडेक की जो प्रॉपर सेटलमेंट हुई, उस पर एक एफर्ट हुई, टीमें मुल्क से बाहर गईं, वहाँ पे वो करके आई, उस मामले को रिजॉल्व करके आई।
तो जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाना, इम्प्लीमेंटेशन फेज में ले जाना। पंजाब में आपको याद होगा मुशर्रफ एरा में जो चिन्योट का आयरन ओर है उसका एक ठेका अमरीकी फर्म को दे दिया गया, औने पौने दे दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि इट इज़ अ ब्रीच ऑफ पब्लिक ट्रस्ट। शहबाज साहब उसको वापस लेके आए, उसका प्रॉपर फिर एक कॉन्ट्रैक्टिंग आउट हुई। तो सक्सेस लाइज इन गेटिंग इट इम्प्लीमेंटेड। अभी भी जो SIFC है, स्पेशल इन्वेस्टर्स काउंसिल जो है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो है, उसके अंदर जो 4 एरियाज आइडेंटिफाई किए गए हैं, माइनिंग उनमें से एक एरिया है। गवर्नमेंट का बहुत फोकस है और प्राइम मिनिस्टर्स पे मुतअद्दिद मीटिंग्स कर चुके हैं। तो ये फिगर्स देना मैं समझता हूँ कोई कामयाबी नहीं है। इसको आगे लेके चलना, पाकिस्तान के मफाद में इससे पाकिस्तान का फ़ायदा लेना, वो असल कामयाबी है जिसकी तरफ काम शुरू हो चुका है। अच्छा सैफुल आबरू साहब, आपको लगता है कि अगर इलेक्शन होता है, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है, तो ये जो हम मादनी ज़खायर की मालियत की बात कर रहे हैं, 2021 में शुरू हुई ये गुफ्तगू जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी, और अब 2023 में जब ये हुकूमत जारी है तो ये भी वही फिगर दे रही है जो आपकी पार्टी की हुकूमत के दौर में एक फ़िगर सामने आई थी। तो अगर इसका दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए मादनी ज़खायर का, तो पाकिस्तान की तकदीर बदल सकती है। मीर साहब, जो पाकिस्तान की बड़े में बड़ी बदकिस्मती है ना इस वक्त तक, देखें मैं तो बात इससे स्टार्ट करूंगा कि हुकूमत जिसकी भी हो, हम इस पे आते ही नहीं कि XYZ जिसकी हो। जब तक आप अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ाएंगे तब तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप कब तक बाहर से लोन लेके, जिसकी भी, मैंने पहले कह दिया कि हुकूमत जिसकी भी हो, हम डिपेंड करते हैं लोन पे कि कोई भी मुल्क आ जाए लोन दे दे। हम आजकल तो फखरिया हो रहा है ना, मतलब कि लोन आ गया जी बड़ी बात हो गई, शादमाने बजाए जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता। जब तक पाकिस्तान में अपने रिसोर्सेज नहीं बढ़ेंगे, आपकी आमदनी नहीं बढ़ेगी, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, तब तक पाकिस्तान स्टेबल नहीं हो सकता। तो देखिए मदनी वसाइल यहाँ इतने हैं, मैं इस बात पे नहीं आता कि मतलब जो है वो फिगर देना बड़ी बात नहीं है, वो चीज़ें इस पर आते ही नहीं हम। बात यह है कि हमें जो हमारे पास रिसोर्स, आप एग्रीकल्चर वाइज देखें, हमारे